Acha, before I start correlation, let me just give you a recap. If we go back and try to recap what we were doing. So basically, we started the chapter of biodiversity, in which first of all we try to understand what biodiversity is. What are the various reasons that contribute to the differences in different kinds of organisms, plants, animals, all sorts? Why are they different on Earth? What makes them different? Okay. We talked about different levels of biodiversity, which is species diversity, genetic diversity, ecosystem diversity. ठीक है, हम सब इसके अलग हैं, हम सब भी, and all planet animals, plants, flowers, because we are living in different ecosystems. We have different genes and alleles, and we are of course belonging to different species. ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया कि थोड़ा सा आपको टेक्स्ट बुक से दिखाती हूँ तो अंदाजा होगा. Then what we did was, if I go back over here, yes, we started from over here. I have deliberately skipped this part, जिसमें the classification is given to you. Skipping all this part, what I did with you was that I started with biodiversity, right? We tried to understand the concept of it, the reasons behind it, and then we started doing some calculations as far as species diversity is concerned. We calculated abundance, we calculated distribution, हमने वो सब किया. ठीक है, अच्छा, recap करना बहुत जरूरी है. And then we moved on to doing assessing species diversity, utilizing different kinds of formulas, and then finally we moved on to sampling. In sampling means that we are sampling on trying to measure the number of different kinds of species living in a certain habitat. In sampling, the two major categories that we did were random and systematic sampling. Random sampling is done for areas which are fairly uniform. Systemic sampling is done for areas which are non-uniform. ये सब हम कर चुके हैं. Then I also gave you a formula, which is the Lincoln's index for doing sampling of animals, which very frequently move their position from one place to another, right? And then we did the Simpson's index of biodiversity. ठीक है, ये हमने last किया था, Simpson's index of biodiversity. So I'm just going to that page of your textbook, जिसमें Simpson's index के बारे में लिखा हुआ है, and then I'll start with कोरिलेशन. आज का टॉपिक कोरिलेशन है. ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, मैं आपको सिम्पसन्स इंडेक्स दिखाती हूँ जी. लेट्स जस्ट कंक्लूड ऑन दिस पैराग्राफ एंड देन वी कैन मूव ऑन टू कोरिलेशन, राइट? बिकॉज थोड़ा सा अगर हम कंक्लूडिंग वाली चीज देख लेंगे तो it will become easier for us to understand what's coming next, right? One advantage of using Simpson's index of biodiversity is that you do not need to identify all or even any of the organisms present to the level of the species. You can, for example, just decide to call the species of animal that has short tentacles animal A, and the species that has a few long tentacles as animal B. So long as you can recognize that they are different species, you do not need to find their scientific names. Why am I doing this with you is, हमने पिछली दफा, अगर आपको याद हो, हम सब ने ये फॉर्मूला यूज किया था, right? And we calculated the Simpson's index of diversity. मरियम, आप मुझे बताओ कि Simpson's index of diversity का जो range है, it is from which number to which number? Yes, Mariam. Miss, I don't remember. I think it was still 1, 0 to 1. 0 to 1 है, ठीक है. अच्छा, अब 0 to 1 है. There are two places. One of them has a biodiversity of 0.7 and the other has a biodiversity of 0.9. Which area is more biodiverse? Miss, can you repeat? One area has a biodiversity of 0.75 and the other area has a biodiversity of 0.9. Which one of them is more biodiverse? .9.
0.9. देखो इसमें आपको ये है कि when you are finding out the Simpson's index of diversity, तो आपको एक चीज बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि your answer should range somewhat within 0 to 1. For example, look here. Let me just go back to क्योंकि ये नहीं समझ आएगा तो आगे का नहीं समझ आएगा. Simpson's index of diversity was what we calculated last time to know about how biodiverse a certain habitat is. The range of answers that you get should be from 0 to 1. ठीक है? 0 अगर आ रहा है तो this means low biodiversity. If you're getting 1, it means high biodiversity. ठीक है? अच्छा, इसी से आप अंदाजा लगाओगे. एंड लास्ट टाइम हमने पूरी कैलकुलेशन की थी. वी डिड द कैलकुलेशन ऑफ शोर ए. हमने पहले शोर ए की बायोडाइवर्सिटी निकाली, फिर वी कैलकुलेटेड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ शोर बी, एंड देन वी ट्राई टू कंपेयर द बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, इस तरह से हमने किया था. एंड देयर वाज वन थिंग व्हिच वी कंक्लूडेड. इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैंने राफे से पूछा था एंड ही वाज सॉर्ट ऑफ केपेबल ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन. तो वो क्या था? आई एम रीडिंग ओवर फ्रॉम ओवर हियर. The higher the number you get for Simpson's index of biodiversity, which is capital D, the greater the diversity. You can probably see that the diversity, अब ये important part है समझने की. The diversity of any area depends on the number of different species there are and the abundance of those species. यानी किसी भी area की diversity depend करती है दो बातों पे. How many numbers of different species are present? ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कितने हैं एंड एक स्पीशी की अबंडेंस कितनी है. अ कम्युनिटी with 10 species where one species is present in large numbers and 9 are very rare is less diverse than a community with 10 species where several species have a similar abundance. इसका क्या मतलब है मरियम? इसको ट्रांसलेट करके बताओ. What do you mean by this? बस इसका ये मतलब है कि we can have like a lot of species but उनके नंबर बहुत कम होंगे, तो इससे abundance अगर उनकी कम होगी तो इस सेंस में फिर it's not exactly very diverse. लेकिन अगर you have a small amount of species और उसके बहुत नंबर है per species, that means abundance बहुत है, तो that's more diverse as compared to more species and less abundance. थोड़ा सा ये आंसर करेक्ट है और थोड़ा सा नहीं भी है. कोई और बताएगा? Somebody else would tell me कि इसका actually मतलब क्या है? हारिस, आपको समझ आ रहा है? मिस इसके अंदर ये शायद ये बता रहे हैं कि लाइक एक कम्युनिटी जिसके अंदर बहुत ज्यादा सेवरल टाइप्स ऑफ स्पीशीज है, उसकी मतलब इतनी ज्यादा अबंडेंस नहीं है, लाइक नंबर्स में वो इतना नहीं है, भले उनकी वैरायटी जितनी भी हो. सो लाइक वो लेस डाइवर्स है एज कम्पेयर टू स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पीशीज, लेकिन उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो, सो लाइक वो ज्यादा डाइवर्स होंगे. हाँ, एक्चुअली वो बिल्कुल सही, ये भी बात सही है. जैसे फॉर एग्जांपल कि ये दो एरियाज है, राइट? देयर आर टू एरियाज and these are the three different species in that area. Every color is representing a species, right? Acha, now I am making two habitats and you will tell me by looking at this pictorial representation which one of them is more biodiverse. ठीक है? अच्छा, हाँ हारिस, अब बताओ. If you are given these two habitats to calculate pictorially, है ना? Pictorial अगर आपसे कोई कहे formula नहीं use करना, just by looking at this picture, which looks more biodiverse to you? मिस लेफ्ट हैंड साइड? नहीं, left hand side बिल्कुल भी नहीं. यही, this is the thing which they are actually trying to explain you. ये देखो, I'm reading from this sentence once again. You can probably see that the diversity depends upon the number of different species. एक तो ये चीज है, number of different species. मुझे बताओ इन दोनों blocks में, both these blocks में, what is the variety of the species? कितनी variety है species की हर block में? 3 types.
3 types, black, red and blue. Every color is denoting a variety. ठीक, एक तो ये चीज. And the abundance of each of those species. Abundance यानी individual number एक species, हर species का. अच्छा, in the box on the left hand side, हमें जो black वाली species है उसके हैं around 1 2 3 4 5 6 7 8, right? And then red species 1 2 3, and blue species again 1 2 3. So the habitat on the left hand side although shows the same variety of species as the habitat on the right hand side, but the distribution is not equal. एक जो black वाली variety है उसके 10 आपको नजर आ रहे हैं quantity, red के 3, blue के 3. Whereas on the other hand you can see that the variety of the species is the same, but for each variety we have equal numbers. So the species, the habitat on the right hand side is more biodiverse as compared to the habitat on the left hand side. अब समझ आ रही है बात मरियम और हारिस? Yes, miss. ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं. अब देखो इसमें let me just read this sentence once again. A community with 10 species where one species is present in large numbers and 9 are very rare is less diverse than a community with 10 species where several species have a similar abundance. Now is it making sense? Yes, miss. Okay, so comparisons using this diversity index should be between similar communities and organisms, right? For example, the Simpson's index should not be used to compare the diversity of fish in a lake with the diversity of moths in a forest. Of course, whenever you will be given such questions to solve, आपको जब भी ऐसे questions मिलेंगे P4 में, आप P5 तो most probably नहीं दोगे, तो you will be given the task to compare the biodiversity of two similar habitats. ऐसे नहीं हो सकता कि आपको कोई कहे कि आप एक you are supposed to calculate the biodiversity of, जैसे example यहाँ दी हुई है, fish in a lake with comparing it with the number of moths in a forest. So you should be given the same habitat. तभी इसी वजह से if we go back and if we see, तो ये जो आपको initial जो question दिया हुआ था ना, here also you were given the task of finding the comparing the biodiversity of shore A and shore B. तो दोनों shores ही थे, ठीक है? Now we move on to जो आज का topic है, वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी it's all calculations, so I want to start that topic with you, and that topic is correlation, ठीक है? अच्छा, correlation actually means literally a relationship between two variables. All those who take maths, or even when you did maths in O levels, you must have done plotted graph between two variables and try to understand the relationship between two variables. ठीक है? So जैसे अब हम जब biodiversity की बात करते हैं, तो we say that there are different kinds of organisms. Let's say बहुत different तरह की butterflies हैं in a garden, different species of plants living in a garden or growing in a garden, और हर plant की height different है. And let's say कि अगर मैं सोचूं कि I'm just picking two random variables और मैं उनका comparison देखती हूँ. For example, I want to pick up the pH of the soil or the water content of the soil and the average length or height of the plants which are growing in a garden. And I am plotting these two variables on X and Y axis and trying to understand the relationship between the two. ठीक है? अच्छा, अब मैं आपसे सवाल भी पूछूंगी. Let's say variable A is the amount of the oxygen or the oxygen. Variable A is the water content of the soil and variable B is the height of the plants. I plotted them and I got such a graph which you can see on my screen right now. अच्छा, हारिस आप मुझे बताओ कि इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है? What is the relationship or what is the nature of the relationship between variable A and variable B? Miss, they are directly proportional. They are directly proportional. अच्छा, ये तो मैंने बनाई है straight line. Let's say कि ये straight line नहीं बनी हुई होती और ऐसे होता. If अगर आपको ऐसे कोई रिजल्ट दिखाता और या कोई सारे प्लॉट्स दिखाता, तो आप क्या कहते कि इसमें लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो क्या इस तरह बननी चाहिए जैसे मैंने बनाई थी? मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही बनेगी. Yes, yes. ऐसे ही बनेगी, ठीक है. Another question. Now, what do I do? I plot another graph, ठीक है, किसी दूसरे गार्डन में, and again I compare
any two random variables जो भी मुझे दिमाग में आ रहे, the color of the flowers, the amount of, let's say कि यहाँ पे एक variable A आता है and then there is a variable B. Variable A हो सकता है the color of the flowers, variable B can be the amount of the sun exposure of sunlight, and then I get a reading somewhat like this. ये reading मुझे नजर आ रही है, ये है मेरे plots. What do you understand by this? What is the nature of the relationship between variable A and variable B? मिस मुझे तो लग रहा है इतना कोई खास रिलेशन नहीं, बिकॉज ये इतने स्कैटर्ड है बिल्कुल स्कैटर्ड, हम सारे तो इसमें पॉइंट। लाइन ऑफ, हाँ हम ये भी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बिल्कुल नहीं बना सकते. इनफैक्ट वी कैन सी that there is no significant relationship between the two variables. इसमें क्या लग रहा है, इसमें बताओ. Again, variable A and variable B, what is the nature of the relationship between these two variables as far as this graph is concerned? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Inversely proportional है, ऐसे लग रहा है जैसे कि as one variable is decreasing, so the other is also decreasing. अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं, let's say if I am drawing these two lines, let me, इसमें तो हम, we can't draw any line over here, right? And if I draw a line, I'm drawing this line like this. ठीक है, तो हारिस और मरियम दोनों में से कोई भी बता सकता है. आप मुझे बताओ कि can I say that this is a positive linear relationship and this is a negative linear relationship? Can I say that? यस। Positive linear relationship या negative linear relationship? अच्छा, अब जो है ना, in biodiversity, if you are an ecologist and you are going out in the field and you want to establish or find out the relationship between two variables and the strength of the relationship and the nature of the relationship, you have to have a statistical formula or a mathematical construct to do that, right? You can't just say सिर्फ एक ग्राफ पे आपने रीडिंग्स प्लॉट कर ली, आप ग्राफ को देख के बताओ कि अच्छा अब इन दोनों वेरिएबल्स में what is the strength of their relationship? Can I give it a certain magnitude? Can I give them a certain number? कि मैं कहूँ कि अच्छा भाई the relationship, for example, अगर ऐसे जब मैंने ग्राफ बनाया ना, अगर इसी तरह का एक दूसरा ग्राफ इसके साथ बना दूं, right? And then I have, let's say, readings ऐसे 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 आ रही हैं और ये ग्राफ ऐसे आ रहा है थोड़ा सा different. तो how would you say कि how different is this graph from this graph? What is the strength of the relationship between variable B and variable A in graph number 1? And what is the strength of the relationship between variable B and variable A in graph number 2? How will I compare the relationship between these two variables in different situations? So for that, I need to have a mathematical formula, right? और उस mathematical formula को हम कहते हैं, we call it a correlation coefficient. Correlation coefficient. Coefficient का मतलब we are assigning it a certain number so that हम उसको number को देख के हम कहें कि अच्छा इसका correlation coefficient इतना है तो इसकी relationship strong है, और उसका correlation coefficient उतना है तो उसकी relationship इतनी strong नहीं है, right? So this is what they are trying to tell you about, and we will be doing a formula in order to find out the relationship. Now your textbook is saying that in order to decide whether or not two variables have an association with each other, the simplest thing to do is to plot a scatter graph and make a judgment by eye. The graphs which I have shown you right now are scatter graphs in which me and you just made a judgment by our eye. But whenever we make judgments by eye, that's a totally subjective analysis. Subjective means कि हम ये इंसान जो है वो judgment pass कर रहा है. So subjective analysis may vary from person to person. But if we want that analysis to be extremely accurate, तो हमें कोई mathematical formula देखना होगा. हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि ये ज्यादा है और ये कम है. जो आपके लिए ज्यादा होगी वो मेरे लिए ज्यादा नहीं होगी. Your definition of zyada is different from mine. So I have to have a certain constant mathematical construct to find out the intensity of the correlation. Okay? So one way is to plot a scatter graph, which you just plotted right now. मैंने आपको plotted graph दिखाया. Exam में the examiner can ask you two things. He can ask you to plot the graph, or and then you have to plot it like this जैसे नजर आ रहा है, और आपसे पूछेगा कि suggest what kind of a relationship you can see, and then next step will be he might ask you to plot the data that you plotted on the graph
and feed it into a mathematical formula and find out the exact value of correlation. इतनी बात समझ आ रही है दोनों को, हारिस एंड मरियम? Yes, miss. Yes, miss. हारिस आपको समझ आ रही है? ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूला पे चलते हैं कि कैसे हम करेंगे फॉर्मूला. अच्छा, एक तो ये है कि फॉर्मूला करने से पहले आई एम जस्ट गिविंग यू 1 to 2 minutes एंड क्विकली गो थ्रू दिस स्लाइड. जस्ट इसकी रीडिंग कर लो एंड व्हेन यू आर डन लेट मी नो, ताकि मैं आगे बढ़ूं. पढ़ लिया मिस, समझ आ गया. समझ आ गए. यही बातें हम अभी कर रहे थे ना. दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, दैट आइदर two variables can have a linear correlation or a non-linear correlation. Again, within linear correlation, it can be a positive linear correlation or it can be a negative linear correlation. ठीक है? और जो ये this graph, this was actually showing you no correlation. ठीक है? This इतना आपको आना चाहिए एग्जाम में करने के लिए. ठीक है? But as I told you, just drawing a scatter graph is a totally subjective analysis. So we need to have an accurate calculation of the correlation coefficient and to find out whether there is a linear relationship and also to find out the strength of the relationship. So this means that to sum up, we can say that through correlation coefficients, ठीक है, what is the advantage of using correlation coefficient? के उसके जरिए से you can confirm two things. What can you confirm? You can confirm whether there is, whether, ये बहुत important चीज है, whether there is a linear relationship. So this means your answer will be yes or no, right? And if your answer is yes, then of course, as a science student, you would like to know, if your answer is yes, you would like to know the strength of this relationship or the strength of this. Strength से मेरा क्या मतलब है? Magnitude. Let's be more mathematical. I want to know the magnitude of this relationship. अब relationship के बजाय I will be using the word strength of this correlation. So मैं इसको correlation भी कह सकती हूँ. I can call it relationship also, right? Let's move on to the mathematical formula. Just a minute, guys. Just give me 1 minute. Okay, so this correlation coefficient, just as diversity had a name, हर formula का एक उसके पीछे नाम है, which is Simpson's index of diversity. So the correlation coefficient also has a name and it is known as the Pearson's correlation coefficient, after the name of the person who actually made this mathematical construct. So through this formula, you can see two things. Number one, two of your questions can be answered. Number one, is there a linear relationship between two variables? And if there is, what is the strength or the magnitude of the relationship, right? Achha. But there are certain conditions. There are certain conditions before which you can decide. यानी ये decide करने से पहले कि आपको यही formula use करना है या कोई और formula use करना है, you have to be very sure about certain conditions. And I will let you know the conditions. Yes, these are the ones. Let me just rub it and tell you. ठीक है. Your objective of applying this formula, which is the Pearson's linear correlation. Objective is you want to know whether there is a linear correlation between two paired sets of data. ठीक है, ये हमारा objective है. अच्छा, conditions क्या हैं? The conditions you need to fulfill is कि at least, जैसे chi-square में भी कुछ conditions थी, तो इसमें भी conditions हैं. At least you should have two sets of data, quantitative data, and you have at least 5 pairs of data, but preferably 10 or more. एक ये condition है. Condition number 1
is that you should have 2 sets of interval data, 5 pairs of data, and if you've drawn a scatter graph, पहले से ही आपने जब scatter graph बना के देखा तो उससे आपको पता चल रहा था कि there might be a linear relationship between those two variables and both sets of data have an apparently normal distribution. ये बहुत सारी बातें जो है ना आपको समझनी पड़ेंगी. 2 sets of interval data. 2 sets of interval data ऐसे कि आपके पास you have a table, right? And you have 2 sets of data. For example, you have the pH of the soil and the other set of data is the average height of the plants. ठीक है? And then you have various readings of pH and different readings of the heights of the plants in the garden. आपने वो सारे readings ले लिए, ठीक है? तो you have fulfilled condition number 1. You have at least 5 pairs of data, लेकिन 10 से ज्यादा हो तो और अच्छी बात है. तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए मिनिमम आपके पास 5 डेटा होने चाहिए, which means 1, 2, 3, 4, 5. Preferably 10 से ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छी बात है. And the third condition is कि आपने ये डेटा लिया and you plotted a graph like this, जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया, ठीक है? pH of the soil को आपने वेरिएबल A बना दिया, एवरेज हाइट को आपने वेरिएबल B बना दिया, और जो भी आपके पास रीडिंग है वो आप प्लॉट करने शुरू हो गए. एंड आफ्टर प्लॉटिंग आपको अंदाजा हो रहा है कि हाँ, इट लुक्स लाइक these points or my plots look like that there is a linear relationship, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन लग ऐसे रहा है कि linear relationship है between the two variables. And all the different kinds of data जो मेरे पास है वो ऐसे लग रहा है जैसे कि उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर मैं उस डेटा को ऐसे एक ग्राफ पे प्लॉट करूं तो मुझे बेल शेप कर्व मिलेगा. ठीक है? अच्छा, इतनी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है दोनों को? मुझे बताओ तो फिर मैं आगे बढ़ूं. बस आपकी आवाज थोड़ी सी मेरे लिए लैग हुई थी मेरे इंटरनेट की वजह से. कर्व वाली बात रिपीट कर सकती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली? एक सेकंड. ठीक है, ठीक है. और हारिस, आपको मेरी बात साफ आवाज आ रही थी? समझ आ गई? बस यस यस बस आ गई. आ गई. देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का असल में मतलब ये है कि बेसिकली कि you have a quantitative data. बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यही मतलब है. क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव. यानी आपके पास नंबर्स ऐसे ना हो कि सिर्फ एक क्वालिटी के बारे में बताया हो कि अच्छा ये क्वालिटी है, वो ये एक तरह की क्वालिटी प्रेजेंट है, वो दूसरी तरह की क्वालिटी प्रेजेंट है. आपको अलग से पता चले कि जो आपको डेटा दिया हुआ है ना वो नंबर हो, नॉमिनल डेटा हो, न्यूमेरिकल डेटा हो. इसका मतलब ये है. ठीक है? अब हम जब करेंगे ना ये फॉर्मूला तो हमें ज्यादा अंदाजा होगा. लेट्स डू इट. द नेम इज Pearson's linear correlation, right? I want to find out whether there is a correlation between two variables, and if there is a correlation, what is the strength of the correlation? So what do I do? अब आपको इन्होंने एक situation दी हुई है. Situation क्या है? For example, we have measured the number of species P and species Q in 10 different 1 square meter quadrat. आपके पास you have a huge piece of land. ठीक है? You have a huge piece of land, and उस piece of land पे आपने you started throwing how many quadrats? 10 quadrats. हम सबको पता है ना क्या है. मरियम, आप बताओ, what are quadrats? Yes, those are basically areas that we've marked जिसका हम डेटा ले रहे हैं रैंडम सैम्पलिंग में भी जो हम करते हैं. Random sample. अच्छा, अब हमें क्या करना है? 10 quadrats में we have to find out species P, species Q, हर 10 quadrat. ठीक है? और फिर हमें क्या करना है? We have to find out are the number of these two species related to each other? ठीक है? क्या इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है कि जो है वो जब भी मुझे किसी क्वाड्रेट में स्पीशी P मिलती है तो वहां पे स्पीशी Q भी होती है, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स से कि इफ आई गिव यू दिस नंबर, ठीक है? अभी क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मैं आपको नहीं कह रही ग्राफ बनाने के लिए, वरना मैं आपको ग्राफ बनाने के लिए कहती. लेट्स से कि आपको एग्जामिनर ने ये दिया है. अच्छा, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पीछे की कंडीशंस से, तो हारिस आप मुझे बताओ जो पीछे की कंडीशंस थी. एटलीस्ट देयर आर 2 सेट्स ऑफ इंटरवल डेटा. 2 सेट्स हैं हमारे पास. यस मिस.
अच्छा, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, ठीक। अच्छा, अब हर सेट में हमारे पास एटलीस्ट मोर देन 5 इंटरवल डेटा है, मोर देन 5, यानी कि Yes. नहीं मोर देन 5 है ना, इस तरह से कि हमने हर स्पीशी को कितनी बार कितने क्वाड्रेट्स में काउंट किया है, 10 में, Yes. है ना, Yes. Yes. और क्या है। तो वो जो कंडीशन थी ना, वो कंडीशन क्या थी, लेट्स गो बैक। द कंडीशन वाज कि यू शुड हैव एटलीस्ट 5 पेयर्स ऑफ डेटा। हमारे पास, इफ वी लुक एट दिस टेबल, लेट्स गो बैक टू द टेबल, हमारे पास 5 पेयर्स ऑफ डेटा से तो ज्यादा ही है ना। दिस इज 1 पेयर ऑफ डेटा, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 5 से ज्यादा है। Yes, miss. ठीक है। अच्छा, और इन्होंने क्या कहा था, प्रेफरेबली 10 या 10 से ज्यादा हो, तो हमारे पास तो 10 है। तो दिस मीन्स दैट वी हैव सेटिस्फाइड ऑलमोस्ट ऑल कंडीशंस ऑफ अप्लाइंग द पियर्सन्स लीनियर कोरिलेशन फॉर्मूला। हमने सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी हैं, हमें एग्जामिनर ने डेटा दे दिया है, एंड नाउ यूजिंग दिस टेबल your job number 1 will be, your task number 1 will be that you will plot a scatter graph। ठीक है। लेट्स से कि अभी मैं आपको नहीं कहती स्कैटर करने के लिए, एंड यू गेट सच काइंड ऑफ अ ग्राफ। इस ग्राफ को बहुत गौर से देखो, टेक 1 मिनट एंड टेल मी वेदर देयर इज अ कोरिलेशन और नॉट। There is. अच्छा, आपको कोरिलेशन लगती है इसमें, ठीक है। क्या नजर आ रहा है हारिस, आपको लग रहा है कि अगर आप इस लाइन को ज्वाइन करोगे तो ये पॉजिटिव लग रही है या नेगेटिव? बस हाँ, पॉजिटिव ही लग रही है, और लाइक इतनी स्कैटर्ड नहीं है, सो पॉजिटिव कोरिलेशन। हाँ, इतनी स्कैटर्ड नहीं है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। लीनियर है या नहीं है हम अभी पक्का नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा, सो your step number 1 will be that when the examiner gives you such a data in which कम से कम आपके पास 2 सेट्स हैं डेटा के, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, और more than 10 pairs of data है, वो भी है। Your step 1 will be that you will plot a scatter graph. Plotted, now you will be using the formula which the examiner will give you for calculating Pearson's linear correlation. ये है वो फॉर्मूला, बड़ा खतरनाक सा, बहुत देर लगती है इसको कैलकुलेट करने में। The formula is the Pearson's linear correlation is represented, जैसे Simpson's index of diversity के लिए we were using capital D, so for Pearson's linear correlation we are using small r is equal to sigma xy minus n x bar y bar divided by n s small x and s small y। अच्छा, अब मुझे ये बात बताओ कि आपके कैलकुलेटर्स में स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये फंक्शन है कि आप उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन डालो और आपको मिल जाए स्टैंडर्ड डिविएशन? हाँ जी, बताओ दोनों। देख के बताती हूँ मिस। मिस ये किससे रिप्रेजेंट होता है, किस सिंबल या नाम से ये फंक्शन? एस से होता है, एस। हारिस, आपके कैलकुलेटर में है? मिस मुझे तो नजर नहीं आ रहा। चलो कोई मसला नहीं है। वैसे यूजुअली व्हाट हैपेंस इन एग्जाम्स इज दैट दे गिव यू अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन, दे गिव यू द फॉर्मूला और आप निकाल सकते हो। एंड अनदर थिंग इज कि कभी कभी आपको पहले से ही स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के दे देते हैं। अच्छा, अब नाउ व्हाट आई हैव ऑन माय स्क्रीन, if both of you can see it very clearly, that they have done this working for this formula.
Now what I'll do is कि मैं ऊपर यहाँ पे लिख देती हूँ formula. Pearson's linear correlation coefficient R is equal to sigma xy minus n x bar y bar divided by n sx और sy. अच्छा, ये एटलीस्ट पता है कि इसका क्या मतलब होता है जब मैं कहती हूँ x bar? What do you mean by that? ये पता है मैथ्स में? जी मरियम, हारिस, आपको पता है व्हाट यू मीन बाय एक्स बार वाई बार? बार हम क्यों डालते हैं? मिस मॉड्यूलस के लिए, मीन के लिए. अच्छा मीन अगर मुझे कहना हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल के कोई स्पीशीज एक्स है, ठीक है, उसका मुझे मीन निकालना है, तो मैं कहूंगी कि मीन के बजाय मैं कहूंगी एक्स बार. अच्छा, अब हम जरा देखते हैं ये हुआ कैसा है. आई नो कि आप दोनों के पास मैथ्स नहीं है ना? नहीं मिस. नहीं बस वैसे मेरे पास नहीं है. मैथ्स के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज these kind of questions don't test your mathematical skills, they test your biological skills. ठीक है, देखते हैं कैसे हुआ है ये. टाइम भी थोड़ा है तो हम इसको एटलीस्ट ये वाला क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं. वी हैव टू कैलकुलेट दिस. ठीक है, अच्छा, और ये हमें सब कुछ करना है. तो जो x और जो y है ना, वो असल में वो क्या है? वो हमारे नंबर ऑफ स्पीशीज p है एंड नंबर ऑफ स्पीशीज q है. याद है शुरू में हमें ये डेटा दिया गया था, ये टेबल दी गई थी. ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पीशी p आपका बन गया x, नंबर ऑफ स्पीशी q बन गया y. एक्स वाई जो है ना, वो एक्स वाई का मतलब है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है. कैसे? ये आपको टेबल दी गई थी, ये टेबल पीछे दी हुई थी आपको, ये वाली. दिस वाज द टेबल दैट वाज गिवन टू यू, जिससे हमने स्कैटर ग्राफ बनाया. हमने वी हैव एक्चुअली कॉपीड एंड पेस्टेड द डेटा ओवर हियर. p को हमने रिप्रेजेंट किया x से, q को y से. अच्छा, इफ वी मल्टीप्लाई 10 into 21, तो यही आंसर आना चाहिए. यस मिस. अच्छा, तो इस तरह से हमने क्या किया, this thing which is xy we have calculated for each of the quadrats. इतनी बात समझ आ गई? xy, ठीक है, हर क्वाड्रेट के we calculated xy. हर क्वाड्रेट के लिए कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या चाहिए? सिग्मा xy. तो सिग्मा xy हमने कैसे निकाला? वी एड अप ऑल दीज नंबर्स. इतनी बात तो बहुत आसान है समझना. ठीक है, जहां पे आपको लगे कि मैं तेज जा रही हूँ, मुझे खुद ही रोक लेना. So step number 1 was to calculate sigma xy. So what did we do? We calculated xy for each quadrat and we added all these and found out sigma xy, which was 2124. We calculated sigma xy, which is 2124. अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है n x bar y bar. अब x बार का मतलब x की मीन और y बार का मतलब y का मीन. तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं, 10 plus 9 plus 11 सबको ऐड करके इनका मीन निकालूं ना, तो the mean that I get is 10.2. ठीक है, similarly what will I do? I will add up all these quadrat में जो हमें स्पीशी y नजर आ रही है, उसको भी ऐड करके और उसका मीन निकालेंगे. मीन तो निकालना बिल्कुल आता है ना, ठीक है हारिस एंड मरियम. और फिर हमने y बार निकाल लिया, वो है 20.4. हम ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट n into x बार into y बार. ठीक है, x बार is 10.2, y बार is 20.4 and we want n x बार y बार. n क्या है हमारा? n हमारा नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स है. n जो नंबर है ना, वो नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स है. तो हमने कैसे निकाला n x बार y बार? n stands for number of quadrat. x bar we calculated 10.2, y bar we calculated 20.4. तो जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2080.8. यहां तक समझ आ रही है बात? यस मिस. हारिस, आपको भी समझ आ गई? यस यस मिस. ठीक है, अब दो नंबर्स आ गए हमारे पास. यहां तक तो बहुत आसान है कैलकुलेशन. जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर के लिए अगेन आपको n चाहिए, यानी कि 10, क्योंकि 10 क्वाड्रेट्स हैं. एंड sx sy, sx और sy का मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्पीशीज x एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्पीशी y.
ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन का एक फॉर्मूला है। अच्छा, अब कैसे निकाली इन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन, देखते हैं हम। ये कह रहे हैं नाउ कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन एस फॉर ईच सेट ऑफ फिगर्स। अभी राइट नाउ सिंस आई हैव वेरी शॉर्ट टाइम, सो आई when we will meet inshallah on Monday, I will give you the formula of standard deviation. उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। अब जिन लोगों के पास मैथ्स है वो आपको अपने कैलकुलेटर में दिखा देंगे, दे विल शो यू हाउ टू पुट दैट फंक्शन, जिससे कि आपको एक सेकंड में स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू मिल जाएगी। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास अभी वो फॉर्मूला है और हमने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल ली या कैलकुलेटर में फंक्शन डाल के निकाल लिया, जिससे कि हमें क्या मिली स्टैंडर्ड डिविएशन। लेट्स सी, फॉर स्पीशीज एक्स we found the standard deviation to be equal to 2.10, and for species y we found the standard deviation to be equal to 2.55. तो हमने क्या किया, हमें क्या करना है, n into sx into sy, meaning 10 into 2.10 into 2.55। ठीक है, ये सब कैलकुलेट जब हमने किया, इसको मल्टीप्लाई किया और ऊपर की भी कैलकुलेशन हमने की। ठीक है, सब कुछ जब हमने कर लिया, क्योंकि हमने दो नंबर्स निकाले, हमने यहाँ से 2124 निकाला और यहाँ से हमने 2080.8 निकाला। ठीक, तो हमने क्या किया, 2124 माइनस 2080.8 डिवाइडेड बाय 10 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर स्पीशी एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर स्पीशी वाई। ये सब वर्किंग करने के बाद, सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद, द वैल्यू फॉर व्हाट, हम क्या निकाल रहे हैं, लेट्स रिमेंबर व्हाट आर वी कैलकुलेटिंग, वी आर कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हमें पता करना है कि what is the strength of the relationship between species Q and species P। तो वो strength of relationship के लिए हमारे पास एक mathematical number आ गया, वो है 0.81। अब समझ आ रही है ये बात? Yes, miss. अब क्या करें इस नंबर का, इस नंबर को हम देखते हैं और ये रीड करते हैं। ये स्लाइड रीड करो और मुझे बताओ कि क्या समझ आया। मिस 0.8 प्लस 1 के करीब है, तो पॉजिटिव होगा या फिर नहीं होगा रिलेशन? पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा ना। जब अगर मैं आपको कहती हूँ इफ आई राइट दिस नंबर, आप इसको क्या बोलोगी, इज दिस अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर? पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर पे प्लस तो नहीं डालते ना। हम जब प्लस नहीं डालते, इट मींस वी आर अज्यूमिंग इज पॉजिटिव, अदरवाइज मैं इसको ऐसे लिखती। ठीक है, अगर ऐसे रिजल्ट आता तो इसका मतलब देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। सो योर टेक्स्ट बुक इज सेइंग के द वैल्यू ऑफ r which is 0.81 जो आपने निकाला है, तो what have you actually calculated? You have calculated the correlation coefficient. This value should always work out between -1 and +1. If you are not getting an answer between -1 and +1, check your calculation, means you are wrong. And what is your conclusion? A value of +1 means total positive correlation between your two sets of figures, जो आपके पास sets of figures थे P and Q. A value of -1 means total negative correlation, and a value of 0 means no correlation. Here we have a value of r जो हमने calculate की है, which is lying very close to 1. तो हम अब आपसे एग्जामिनर सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि आपने कैलकुलेशन कर दी तो बस। The last part of your question will always be in which the examiner will ask you to make a conclusion of your calculations. तो आप क्या conclusion करोगे, ये रही आपकी conclusion. Let me highlight the conclusion. This is your conclusion. You will say there is a positive linear correlation between the numbers of species P and the numbers of species Q. पीछे चलते हैं, ये रही हमारी table. This was our initial table that was given to us. At that time, we had no idea कि इन दोनों में कोई positive linear correlation है या नहीं. The only idea we had was when we drew a graph. But this graph did not give us a mathematical value. Having gone through all the steps of calculations that we've done up till now,
Now we can say with complete conviction that there is, since the value of small r is equal to 0.81, so there is a positive linear correlation between the numbers of species, individuals of species P and individuals of species Q. ठीक है? समझ आ गया? Yes, yes. ठीक है. With that, I'm just ending my class. ठीक है? इंशाल्लाह next time हम इसका इससे connected एक और formula है, हम वो करेंगे. ठीक है? तो अगर कोई question नहीं है तो can I end the class? Yes, Miss Lafis, thank you. Hafiz.